वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने ये बहुत ही डिफरेंट आई मेकअप लुक किया है जो कि बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है। ये काइंड ऑफ ग्राफिक आईलाइनर लुक है, मीन्स मैंने एक्चुअली ये फायर इंस्पायर्ड आई मेकअप किया है। टर्न आउट बहुत ही अच्छा हुआ है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गोइंग टू टेक a fluffy brush like this one and I'm going to take this orange shade right here. I'm gonna apply on my eyelid. Then I'm going to take this hint of red and apply it on that orange eyeshadow. Then I'm going to take this yellow shade on my new brush, which is cleaned totally, and I'm going to blend it upward. नेक्स्ट हम सेम ऑरेंज आई शेडो लेंगे और अपने आउटर वी पर फोकस करेंगे बिकॉज हमें हाफ कट क्रीज करना है, फुल कट क्रीज नहीं करना है। नेक्स्ट मैं ये ब्राउन शेड लूंगी और अपने आउटर वी को थोड़ा इंटेंसिफाई करूंगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे हाफ कट क्रीज और उसके लिए मैं इस टाइप की ब्रश ले रही हूँ और कंसीलर। नेक्स्ट हम लेंगे ये आई शेडो और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसमें हल्की सी शाइन है तो ये हम लगाएंगे अपने जो हमने कट क्रीज किया है उस पर। ओह वाओ, लुक एट द शाइन। नेक्स्ट हम सेम येलो वाला ब्रश लेंगे और येलो कलर लगा के यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड करेंगे। देन थोड़ा सा ऑरेंज। So for the liner part, I have this Athena. You can be Athena palette, and this is brand new. मैंने अभी तक इसे यूज भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, but yeah, I'll try it out. I have this brush. एंड लिटरली मैंने एक ब्रश परचेज किया था फेस सेट करने के लिए और आई डोंट नो वो कहाँ गायब हो गया, बट यार हम इसी से काम चलाएंगे। एंड आई एम गोइंग टू डिप इट इन वाटर एंड लेट्स सी। मैं पहले हाथ पे ट्राई करूँगी। आई गेस दिस येलो विल फैबुलस। This is how it looks. Let me try this one. जो ज्यादा अच्छा लगेगा मैं वही यूज करूंगी। This one is much more brighter than this one, so I'm going to use this one. I think it looks great and I've done a very good job right here. So इसे complete करेंगे अब हम। Next, I'm going to use this You Can Be brown eyeliner और मैं इसे उसके ऊपर लगाऊंगी ताकि इसे थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल सके। You can see my palette.
इसके ऊपर अब मैं ब्लैक आईलाइनर लगाऊंगी और मैं ब्लैक आईलाइनर अच्छे से लगा के आपसे मिलती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हम लोअर लैश लाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ये शेड और इसे हम अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लेंगे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मेबलिन का हाइपर कर्व मस्कारा। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे ब्लश एंड कंटूर भी करेंगे और हाइलाइटर भी करेंगे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी लिपस्टिक और एक न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का लिपस्टिक इन द शेड डिवाइन मॉव 70। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो यार मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।